अच्छा, तो हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के एमसीक्यूज की डिस्कशन कर रहे थे। 60 हमने कर लिए थे। ओके, नाउ 61 है पीएमसी पे टेस्ट के एमसीक्यूज है कि द स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूअस विद व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेडुला ओब्लांगेटा। ओके, इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द नर्व दैट अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, सो उसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। और फिर उसने क्या, एंड ब्रेन, ब्रेन वाले को तो हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, बट यहाँ पे इसने कोई स्पेसिफिक नहीं कहा हुआ। ठीक है, आउट ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, हाउ मेनी पेयर ऑफ कोसिजल नर्व आर देयर? सो वन कोसिजल तो वन है। द वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन ऑफ, सो वेंट्रल में हमारे पास मोटर न्यूरॉन होते हैं और डार्सल में हमारे पास सेंसरी होते हैं। ठीक है, 65 है हमारे पास के आउट ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइन, हाउ मेनी पेयर आर लुम्बर नर्व आर देयर? सो लुम्बर में हमारे पास 5 आते हैं। द मेडुला ओब्लांगेटा इज फाउंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? सो दे आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आउट ऑफ 31 पेयर स्पाइनल, हाउ मेनी पेयर ऑफ सेक्रल नर्व आर देयर? तो सेक्रल भी हमारे पास 5 होते हैं। द डॉर्सल रूट, अभी मैंने बताया डॉर्सल में हमारे पास सेंसरी आते हैं। ठीक है, व्हाइट मैटर हैज, so white matter has myelinated neuron. The shape of gray matter is, so shape of gray matter is butterfly shape. The spinal cord is divided into how many different regions? so इसको हमने 4 different region में divide किया हुआ है। ठीक है, how many lamina present in the spinal cord gray matter? so there are 9. व्हाइट मैटर इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, सो अभी पीछे हमने पढ़ा सोमास बॉडी ना, व्हाइट मैटर इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, वो पीछे और था। आउट ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, हाउ मेनी पेयर ऑफ थोरेसिक नर्व आते हैं? सो थोरेसिक नर्व हमारे पास कितने पेयर होते हैं? हमारे पास 12। नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व हमारे पास पेयर में कितने हैं? 31 है और टोटल वैसे 62 हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन? So what is the important structure between body and brain? Spinal cord, अभी हमने पीछे पढ़ा कि लिंक था हमारे पास बॉडी और ब्रेन के दरमियान। रेगुलेशन ऑफ डैश इज नॉट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इन ह्यूमन। नो, सो सर्केडियन रीजन ये तो हमारे पास इसका काम नहीं है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन विच लाई बिलो द सेरिब्रम, so that is thalamus. Which portion of the brain is primarily responsible for transmitting the information to the other of the nervous system? So that is medulla. The largest part of the four brains, वो हमारे पास क्या है? सेरिब्रम में बिलियन ऑफ न्यूरॉन हमारे पास इसमें होते हैं। ठीक है, sensory area that receive impulses from the skin are contained by which of the following? So parietal lobe, breathing and heart rate is controlled by which of the following? So it's the function of medulla. Which of the following is required for learning? Learning, long term memory हम क्या कहते हैं? हिपोकैम्पस. Which of the following is related to hypothalamus? So all of these is so correct. ये सारे फंक्शन है हमारे पास। मिड ब्रेन इज आल्सो नोन एज मेसेंसेफेलॉन, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट अबाउट cerebrospinal fluid. So present between meninges, yes, provide protection. फिर central pH is below 7, ये wrong है हमारे पास। ठीक है, ब्रेन पार्ट दैट कोऑर्डिनेट स्केलेटल मसल, सो दैट इज सेरिबेलम है ना, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन में हेल्प देता है। इट एक्ट हैज रिले सेंटर कनेक्टिंग हाइड ब्रेन विथ फोर ब्रेन, सो दैट इज मिड ब्रेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा? कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट्स द नॉट द फंक्शन हमारे पास। ठीक है, breathing, swallowing, heart beat, yes, it's the function. Which is involved in long term memory? Long term memory में हमारे पास कौन इन्वॉल्व होता है? हिपोकैम्पस। Which of these is involved in coordinating movement of the body? So अभी हमने पीछे movement coordination हमारे पास cerebellum कर रहा था। The diencephalon comprises of, so diencephalon में हमारे पास thalamus आ जाता है, limbic system आ जाता है। The brain is protected by, so brain is protected by cranium. ठीक, the cerebrospinal fluid is similar in composition to, so it is similar in composition to blood plasma. Which fluid bathes the neuron of brain and spinal cord and provide cushion like? So ये हमारे पास किसका फंक्शन है? cerebrospinal fluid. The brain is mainly divided into dash part, so 3 parts: forebrain, midbrain, hindbrain. The embryonic hindbrain give rise to which structure in brain? So hindbrain से कौन से structure? cerebellum, pons and medulla oblongata. The communication between two hemispheres is the function of,
कौन करता है ये हमारे पास कार्पस कलोसम। द कंपोजिशन ऑफ ब्रेन स्टेम में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, मेडुला, पोन्स एंड मिड ब्रेन, MPM, ठीक है, मेडुला, पोन्स एंड ब्रेन, मिड ब्रेन। Which lobe is involved in short-term memory, speech, musical rhythm, and some degree of small recognition? So that is कौन सा लोब होता है, टेम्पोरल लोब, ठीक है। टेम्पोरल लोब is involved in short-term memory, speech, musical rhythms. Which of the following is involved in sleeping and waking? So sleeping and waking में हमारे पास hypothalamus. Which part of the brain connect the cerebrum with the spinal cord? So brain stem. The functional part of both forebrain are. So forebrain के कौन सा, thalamus, cerebrum, ये हमारे पास forebrain में आ जाते हैं। The brain portion that is reduced in human. The 103 में क्या था हमारे पास, C, ठीक है, 103 में C था, देखो ना मैंने कहा, मैं इस थैलमस, सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम भी तो आता है ना, आप लोग देखो ना, लिम्बिक सिस्टम भी तो हमारे पास फोर ब्रेन में ही आता है, ठीक है। थैलमस लिम्बिक नहीं, दोनों हैं, ये करेक्ट है, बट अगर उसमें साथ सेरिब्रम आ जाए तो वो भी तो फिर तो ये तो फिर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा 103 में सी था। 104 द ब्रेन पोर्शन दैट इज रिड्यूस इन ह्यूमन। सो हमारे पास कौन सा है, रिड्यूस इन ह्यूमन, मिड ब्रेन। द ऑडिटरी रिले सेंटर इज फाउंड इन, सो इट इज फाउंड इन मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इंक्लूड, हाइंड ब्रेन में हमारे पास मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। व्हिच पार्ट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फोर ब्रेन? सो दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। व्हिच ब्रेन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस? सो लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। The thalamus and the hypothalamus are located in which region of the brain? So they are located in the encephalon. क्योंकि एक हमारे पास टेलेंसेफेलॉन होता है और एक फोर ब्रेन में डेंसेफेलॉन होती है, हमारे पास भी डेंसेफेलॉन में आते हैं, ठीक है। द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और राइट साइड ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। द लाइटर इनर सेक्शन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड, सो वो हमारे पास व्हाइट मैटर होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड का वो ग्रे होता है, ठीक है। द ब्रेन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग ऑल इनकमिंग सेंसरी डेटा। सो सेंसरी डेटा में हमारे पास थैलेमस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। द ब्रेन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग ऑल इनकमिंग सेंसरी डेटा, इसमें हमारे पास थैलेमस सेंसरी में इन्वॉल्व होता है ना, बट द ब्रेन, एक मिनट में आप लोगों के लिए कंफर्म कर देता हूं कि द ब्रेन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर, द ब्रेन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग सेंसरी, तो इसमें हमारे पास थैलेमस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पीएमसी की में मेरे आई थिंक रॉन्ग दिया हुआ इन लोगों ने सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि सेंसरी में तो हमारे पास थैलेमस इन्वॉल्व होता है। जो 113 है हमारे पास, द ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व इन कॉन्स्पिक्यूअस एक्टिविटी दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पे फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन? सो दे आर फाउंड इन हाइंड ब्रेन। द डार्कर आउटर पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड, सो आउटर पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड ग्रे मैटर, ठीक है, और इनर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड ग्रे मैटर। और वो बटरफ्लाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल, ठीक है। 117 terminal branches of axon end in, so they end in synaptic cleft. Resting potential in nerve impulse cells is maintained by, so they are maintained by resting potential। तो हमारे पास none of the above, कोई भी मेंटेन नहीं करता, वो तो हमारे पास जब कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा ना, उसके बाद रेस्टिंग पोटेंशियल जो है ना वो खराब हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। What is the condition of the neuron under resting membrane potential? So resting में हमारे पास क्या होता है, outer surface of neuron पॉजिटिव होता है और inner surface हमारे पास नेगेटिव होता है। resting membrane potential is -70 मिलीवोल्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। इससे आगे MCQ हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।